This is a daytime footage from RedTiger F17 Dashcam, and this is a nighttime footage from F17 Dashcam from RedTiger. So this is our RedTiger Dashcam. Model number is F17, and as you can see on screen, it is 4K Dashcam. This is a 3-channel Dashcam, and the main thing is this is the updated model, 2026 model. So now it is coming with the most awaited Starvis 2 sensor. So Starvis 2 sensor, as you know, it will be helpful during the night driving. So on front we get RedTiger branding. On side we get the features like loop recording, app control, and G sensor. On side there is a RedTiger branding, and on other side the technical details like this is the 4K dashcam, 3-channel 4K dashcam. Front is 4K as I mentioned before, and cabin plus rear camera is 180p. You can use it as a dual channel as well with 2.5K, and it has built-in GPS and Wi-Fi. The box is already open because we have ordered this particular dashcam from Amazon, and with Amazon we need to go for a open box delivery. So once the delivery partner comes for delivery, we need to open the box and get it verified. So hence the box is already open. So we are just going to see the content. So once you open, you get this technical detail diagram that what all things are there on this particular camera. So here is the main camera. We get a user manual and electrostatic sticker. So we get two more boxes. One is for the rear camera and other one are for the cable supplies. So this is the main camera. So if you open it, so this is the main device. This is a cabin camera, and this is the main front camera. There is no telescopic adjustment or anything, but it captures everything dynamically. This one also has a little movement, so you can adjust the angle of this cabin camera as per your requirement. This is a mount is itself act as a GPS as well. You get a type C port for connecting your power cable, rear cable connector port, and you also get a SD card slot. And good thing is that this particular dash cam comes with a, as you can see, this is a 64 GB card. So they supplied, so this is a good thing that you get a pre-supplied memory card, so you save some money there and you are ready to start with your dash cam. So let's keep this aside. On the front first box, this is a rear camera box. So once we open it, so we get a rear camera, and this is a very long cable available with it, so we can connect it. Now the second box is for power supply cable for car charger, cable clips, and some adhesives. So if we open it, so we can see some adhesives, tool, and power adapter, and some adhesives. So these are all things what we get with the package. So the first is the front and the cabin camera, then we have the rear camera, uh, cable adapter, a tool to fix the cables, some adhesives, and this one is for the rear camera, Unvono adhesive, and documentation. So that's it. Now we will get the camera fitted in our car. One more thing you need to note is this is an old type of adapter. This is a one drawback I feel. Even if this is an upgraded model for 2026, they must have provided an option, either a connector here, because all modern cars will directly have a USB type adapter or Type C adapter. So this one is old type, and this will not helpful for the new cars. So for new cars owners, we need to get a adapter to get this working. Now let's proceed for the installation of dashcam. So here we are in the car accessory shop.
where these two guys are assisting us to fit our RedTiger F17 dash cam. पहले हमने सोचा था कि हम खुद ही लगा लेंगे एज इट वाज लुकिंग लिटिल इजी, बट लेटर वी थॉट व्हाई टू टेक रिस्क, एंड दैट वाज अ गुड डिसीजन। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो, क्लीन सेटअप करने के लिए आपको मल्टीपल कंपोनेंट ओपन करने पड़ रहे हैं कार में, एंड यू शुड नो फ्रॉम वेयर वायरिंग शुड गो। सो वो फर्स्ट टाइम और DIY के लिए नॉट दैट गुड। और आप जैसे देख सकते हो, देयर आर मल्टीपल पार्टीशंस और कट्स और जहाँ से वायरिंग निकालनी पड़ती है फॉर अ क्लीन इंटीग्रल सेटअप। तो इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन टू गेट अ सर्विस फ्रॉम अ एक्सटर्नल सर्विस और पार्टी। सो जैसा आप देख सकते हैं, वन पर्सन इज डूइंग द फ्रंट कैमरा सेटअप एंड वन पर्सन इज डूइंग द रियर कैमरा सेटअप। सो रियर कैमरा setup is done. He is putting the casing around it, and now that part is completed. Same goes for the front. Front part का wiring setup is done, and he is now fitting back the component which were removed for the wire fitting and everything. तो यहाँ पे हमारी वायरिंग के साथ रियर कैमरा अटैच कर दिया गया है, और वायरिंग जो है वो केसिंग के अंदर दबा दी गई है सो दैट वो विजिबल ना हो। डैश कैमरा सेटअप बैक का हो गया है, और फ्रंट का भी सेटअप उन्होंने कर दिया है, जस्ट डूइंग द टेस्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्यू एंड एवरीथिंग। Yes, and now we are deciding where it need to be placed perfectly. So after a few tries, we managed to get a perfect location, और वहाँ पे फिर भाई ने वो प्लेस कर दिया है। सो दैट्स इट। सो हमारा कैमरा सेटअप इज़ डन। दिस इज़ द रियर कैमरा सेटअप। तो थोड़ा एडजस्टमेंट के बाद अभी व्यू परफेक्ट आ रहा है। सो नाउ वी आर डन। सो ये पार्ट अभी ऐप से कनेक्टिविटी के साथ है, तो रेड टाइगर ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, एंड देन यू नीड टू फॉलो द सेटअप स्टेप। सो लॉग इन विथ योर गूगल अकाउंट, देयर आफ्टर start the Wi-Fi from the front camera and connect your device. So जैसा कि आप देख सकते हैं, आफ्टर लॉगिन हमने सर्च किया, and it is asking for few permissions, and thereafter the device is connected. So now we can see the camera view, and इसमें all three views we can see: front, rear and cabin. So जैसा आपको चाहिए आप वैसा पूरा देख सकते हो लाइव, and from same app you can download the recordings as well. सो भैया ने हमें ऐप पूरा एक्सप्लेन किया हाउ द थिंग्स आर, एंड ये है रिकॉर्डेड वीडियोस जो हम देख सकते हैं। सो ये हमारा फाइनल सेटअप है डैश कैम का। आप जैसे देख सकते हैं, वायर आर नीटली टक्ड इनटू द होल्डर्स। चार होल्डर यहाँ पे यूज़ किए हैं, ऊपर दो और नीचे दो, और बाकी वायर जैसे आपने देखा पूरी टक्ड है इनसाइड इन द पिलर्स एंड एवरीथिंग। और यहाँ से वायर निकाल के ये एडाप्टर यहाँ पे लगाया गया है। और अब जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा पहला आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें हमने पीट्रॉन वायरलेस एप्पल कार प्ले का डिटेल्स दिया था, तो वो भी हमारा एक USB पोर्ट में लगा हुआ है। तो एक 12 वोल्ट का चार्जर में हमारा रेगुलर अभी डैशकैम लगा है, और एक USB पोर्ट फ्री है, और ये वायरलेस चार्जर जो है ये एक्सेसिबल है, उसमें कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ द ओवरऑल सेटअप। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैक कैमरा, वो हमारा बैक कैमरा है, और आप वहाँ पे थोड़ी वायर एक्स्ट्रा छुड़ी हुई देख सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि पीछे का डोर जो है वो ऊपर खुलता है, तो उस वजह से वो उतना वायर का प्ले रखना पड़ता है, अदरवाइज़ डैश कैम अपना निकल जाएगा जब अपन डोर पूरा ओपन करेंगे। सो फिटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। वन मोर थिंग इज़, यहाँ पे जो लास्ट बटन है उससे आप वीडियो ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहीं से वीडियो टॉगल भी कर सकते हो। तो अभी जो है ये फ्रंट का वीडियो है, अगर आप और एक बार दबाते हो तो टाइमर और टाइम डेट एंड टाइम के साथ आएगा,
जो सेट करना है अभी ये वाला, ये कैबिन का है और ये बैक का है। और अगर हम फिर से करते हैं तो ये ऑल व्यू इन वन मिल जाता है। यहाँ पे जो आप सेकंड बटन देख रहे हो, ये बटन हम अगर कंटिन्यू दबा के रखते हैं फॉर फ्यू सेकंड्स तो वाईफाई मोड ऑन हो जाता है। और वाईफाई मोड ऑन होने के बाद ही आप ये डैश कैम जो है आप मोबाइल से कनेक्ट कर पाओगे। उसके बाद ही आप जो अगर वीडियो डाउनलोड वगैरह जो करने हैं वो सब उसके बाद ही कर पाओगे। तो ये एक बेसिक याद रखना है आपको। और उसके बाद जब आपका एक्टिविटी हो जाता है तो इस सेकंड बटन को फिर से फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड करके रख दीजिए और वाईफाई मोड जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। और वन मोर थिंग इज़, जैसा कि हमने पहले बताया, हमारे पास वायरलेस कार एडाप्टर भी लगा हुआ है। तो वो भी ब्लूटूथ और वाईफाई मोड पे चलता है। वन थिंग वी लर्न इज़ डैश कैम को कनेक्ट होता है फॉर वीडियो डाउनलोड एंड ऑल दोस थिंग, ऐप कनेक्टिविटी के लिए। तो हमें ये एडाप्टर निकालना पड़ता है सो दैट मोबाइल, क्योंकि हम एक ही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं दोनों चीज़ों के लिए, तो उसके इसमें हमें ये डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। जो ये वाला जो अडाप्टर है ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा वायरलेस कार प्ले का है और ये जो है वो डैश कैम का है। तो ये हमें निकालना पड़ा था। रेगुलर वर्क में कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डैश कैम अपना रिकॉर्डिंग करता रहेगा और मेन जो है वो वायरलेस कार प्ले हमारा कनेक्टेड रहेगा। बट जब हमें ऐप से कनेक्ट करना है तभी हमें इसको डैश कैम तभी हमें इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक एडिशनल चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे वो होगा एक्चुअल डैश कैम फुटेज डे और नाइट का। This is the daytime view from the front camera of RedTiger F17 dashcam। जैसा कि आप देख सकते हो व्यू काफ़ी अच्छा है, वाइड व्यू कैप्चर कर रहा है एंड सर्विस टू सेंसर इज़ वर्किंग क्वाइट गुड। स्क्रीन पे जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डैशबोर्ड एंड स्टफ विच इज़ ऑल्सो वेरी मिनिमल एज कम्पेयर्ड। और आप जैसा देख सकते हो द नंबर प्लेट फ्रॉम द फ्रंट व्हीकल इज़ विजिबल quite clearly. Also, you can see the distance between two cars and you can verify that the number plates are quite visible from a distance. And if you zoom in, the details are clearly available for any event happens and you need to note down the number plate. Now this is the rear view camera details. As you can see, the number plates and everything are quite visible. If you zoom in, so you can read the number plate quite clearly. As compared to front camera, yes, the distance between your car and back car, if it is too much, then the number plate will not be visible, because the back camera resolution or rear camera resolution is 180p only. But overall it is very good, as you can see on screen. The area or angle it is covering is quite good, so you can see everything from the rear view camera. And in case of any event where you need to produce a evidence that there is no fault from your side, it will be able to help you in that. Now this view is from the cabin camera. So as you can see, it is covering all the passenger which are sitting inside. You are getting some view, not fully, because it is only covering in one direction. So you are not getting a side view from the driver side or the co-driver side, but for internal cabin activity, you are getting a full view and it is quite clearly visible as well. So as compared to the other cameras which are available in market, this one provides very good resolution and capture for the cabin camera as well. So in this price range, getting all the three cameras with good resolution is quite appreciated. So now this is the cabin camera in the night view. So as you can see,
it is converting the footage to black and white or grayscale because of the night capture, but overall details are visible. It will not be it is not as good as the daytime footage, but you can make out all the details, all the four seats are getting covered, and it is manageable but not very good. So this is the front camera night view, and as you can see, the number plate is quite visible, and here the Starvis 2 sensors comes into picture, and which is quite helpful. So glare from the incoming cars is also manageable, and Starvis 2 sensor does a very good job there. So जैसा कि आप देख सकते हैं, details are visible, and based upon the light availability from your headlight or surrounding street lights and everything, the picture quality will improve. That is one thing you need to consider on that part. But overall, Starvis 2 is doing a good job, and there is no denial on that part. So this is the footage from rear camera during night time, and as you can see, the glare coming from incoming vehicle is quite high, and because of this, the number plates are not readable. But if you have a vehicle which is like scooty or Activa, where there is a distance between your headlight and number plate, then the glare is not that much effective, and you will be able to read the number plate. Also, as you can see, if the distance between the incoming car and your car is less than a few feet, then you can read the number plate, as you can see on screen. Yep. So that's it for today's video. Hope you enjoyed the content provided. If you are happy with it, do hit that like button, and subscribe to our channel so that we can bring such informational video to you. Thank you and have a nice day.